Hello students, today we will talk about what will happen if we put animal cell or a plant cell into sugar or salt solution in water. Here we will discuss three conditions. First, if the medium surrounding the cell has higher concentration or higher water concentration than the cell, meaning outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is called as hypotonic solution. Water molecules are free to pass in both the direction, but more water will come into cell than will leave. So, what will happen? The cell will gain water and it will swell up. Second, if the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be the movement of the water across the cell membrane. Such solution is called as isotonic solution. Some amount of water goes in and out of the cell, or same amount of the water goes in and out of the cell, so cell will stay same size. There will be no gain of water, no loss of water. Third, if a medium has lower concentration of water than the cell, meaning very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such solution is called as hypertonic solution. The water crosses the cell membrane in both the direction, but more water leaves the cell than enter it. Therefore, the cell will shrink. So, here we have to simply understand कि अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, और सेल के अंदर सेल की जो अंदर की कंडीशन है वो हाइपरटोनिक है, यानी सेल के अंदर पानी कम है और उसके अंदर सॉल्ट या शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मिनरल्स या आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी सेल के अंदर आ जाएगा और सेल स्वेल अप हो जाएगा। दूसरा केस क्या होगा? अगर हम इस सेल को ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसमें पानी की कंसंट्रेशन और सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम है जैसी सेल में है, तो सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, अगर हम सेल को ऐसी कंसंट्रेशन वाले मीडियम में रख देते हैं जो कि हाइपरटोनिक है, यानी हाइपरटोनिक का मतलब है जिसमें सॉल्ट वगैरह की कंसंट्रेशन ज़्यादा और पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी की कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा होगी तो सेल से पानी बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे केस में सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। यू जस्ट ऑब्जर्व दीज थ्री डायग्राम्स। फर्स्ट केस, when large amount of water move into the cell will swell up. Second case, same amount of water goes in, same amount of water goes out, so cell remains same size, and then when the water moves out it will shrink. But in the case of plant cell, this is not exactly the same. In plant cell, when we place the plant cell in a hypertonic solution, the cell will shrink, but the cell wall remain at its position, but the cell membrane will shrink and cell wall remain at its place. So this phenomena is called as plasmolysis in plant cell. When a living plant cell loses water through osmosis, then there is a shrinkage or the contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is called as plasmolysis. Thank you.